اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے کل یہ ڈیٹ اناؤنس کر دی اور اب لوگ لگ جائیں گے الیکشن کی تیاریوں میں، کینڈیڈیٹس کھڑے ہو جائیں گے اور ایک اچھی فضا بنے گی الیکشن کے لیے. لیکن اگر ہم دیکھیں گورنر صاحب اور سینٹرل گورنمنٹ نے یہاں پہ پنچایت الیکشن کیے، میونسپل الیکشن کیا، اب لوک سبھا الیکشن بھی ہو رہے، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں؟ اسمبلی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کچھ گڑبڑ کرنے کی سوچی ہوگی اور اسی لیے انہوں نے یہ الیکشن روک دیا ہے. کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جب ہزاروں لوگ الیکشن میں شامل ہوئے جس طرح وہ کہتے ہیں، اور اس وقت ساری سیکورٹی بھی تھی، پنچایت کے پورے الیکشن ہوئے، میونسپل کمیٹیز کے الیکشن ہوئے، ٹاؤن ایریا کمیٹیز کے الیکشن ہوئے، اچھی طرح سے ہو گئے. آج انہیں کیا خطرہ لگنے لگا جبکہ فوج اس سے بھی زیادہ ہے، ہر کونے میں یہاں پہ پھیلی ہوئی ہے الیکشن کے لیے؟ کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ سب پارٹیز جو ہیں اس حق میں ہیں کہ دونوں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے؟ یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور اگر ہم ایک جٹ لڑیں گے تو ان کا جو یہ مقصد ہے یہاں جو بھی کرنا ہے وہ فیل ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی صورت میں مرکز کو یہاں پہ بربادی کرنے کے لیے موقع نہ دیں. پارلیمنٹ الیکشن کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے. اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے بالکل ٹھیک ہے فضا، تو اسٹیٹ الیکشن کے لیے کیوں نہیں ہے فضا؟ پارلیمنٹ الیکشن بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اگر فضا یہاں اتنی خراب ہے. مجھے حیرانی ہے یہ کہہ رہے ہیں، انہیں خود اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنگ سے بچا. آج تک 4 جنگیں ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہوا، ہم ہی مارے گئے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اگر کوئی راستہ نکل سکتا ہے ان دونوں ملکوں میں، ایک تو بات چیت سے نکل سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زور سے کوشش کرنی چاہیے. اگر نہیں کیا تو وہ ملک دنیا میں قرار دیا جائے گا ایک دہشت گرد ملک، اور وہاں کے لوگوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی، اور ان مصیبتوں کے لیے انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل اپنے سفیر کو بھیجا تھا، مشیر کو بھیجا تھا، جنہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات کی ہے ہندوستان کے، سشما سوراج جی سے بھی بات کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک جنگ کا ماحول بن رہا تھا ہو سکتا ہے اس میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، کمی ہو گئی ہوگی. آپ بھی دعا کریں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ملک کیوں نہ ہو، امریکہ اور روس، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. Your opinion as per the present situation which people are facing due to the rifts between the two countries? I think we are facing tragedies, and that is unfortunate. It is unfortunate that we have a situation where war is looming on our heads. We want peace. We want understanding between people. Unfortunately, in this election, the party that is ruling is creating a rift between various religions. And that is a tragedy for this country. Muslims feel threatened. Minorities feel threatened. And that is unfortunate. And I think Prime Minister should make it very clear that this nation doesn't belong to one party or one sect of people. He should make it very clear that it belongs to all of us and that we all have to live in peace and harmony with each other. Otherwise, this nation is doomed. Wonderful. We shot one of their planes. And you say, where is the proof of that plane that you shot? Where is the proof that you say, Amit Shah says, 300 people died? Where is the proof of those 300? And if you ask, you are anti-national. You are against the country. Bugger all. Time has come when you should ask questions. When you should say, where are we going? What direction are you taking? This is not the India that I knew as a child.
I wish that India returns. I don't know whether it will return. In the memory of George, a fighter for truth, accepted mistakes boldly, first man who had the courage to say in the parliament that in own Nehru's writing there is no sensitive place should be given to a Muslim. दोनों मुल्कों के बीच जंग बाल बच गई जंग से, तो इस वक्त आप कैसे सिचुएशन देखते हैं दोनों मुल्कों? देखिए, जंग की हालत जो है खत्म हो गई है. ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं. आर्मी को तैयार रखो कि यहां जंग होगी. कोई जंग होने वाली नहीं है. सारी दुनिया देख रही है. ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. जो आज की हुकूमत है वो हमारे फौज के अफसर को, बड़े अफसर को इस्तेमाल कर रही है. जिसको इन्होंने लाया कईयों को छोड़ के, आज वो उनके उंगलियों पे नाच रहा है. हमें पार्लियामेंट में पहले ही पता था कि क्योंकि बाकी चीज़ों में फेल हो गए हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में, जिससे कि ये एक ऐसा अवतार बन जाएगा कि इसके बजाय हिंदुस्तान बच ही नहीं सकता. हिंदुस्तान तब भी बचेगा, ये रहे या न रहे, हम रहें या न रहें, हिंदुस्तान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा. ये जो गलत फहमियाँ ये पैदा कर रहे हैं कि हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमियाँ हमने पहले भी देखी हैं. कुछ लोग पहले भी कहते थे कि हमारे बगैर कुछ नहीं है. आज भी हिंदुस्तान चल रहा है. टोटल इलेक्शन के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी उसी के लिए थी. कोई मरा ही नहीं वहां पे, सवाल ही नहीं. बल्कि हमारा ही जहाज गिर गया. हमारे पता नहीं कितने करोड़ों के उस जहाज का नुकसान हो गया. शुक्र कीजिए पायलट बच गया और इज्जत से वापस आ गया. और अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कल ये डेट अनाउंस कर दी और अब लोग लग जाएंगे इलेक्शन की तैयारियों में. कैंडिडेट्स खड़े हो जाएंगे और एक अच्छी फिजा बनेगी इलेक्शन के लिए. लेकिन अगर हम देखें गवर्नर साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पंचायत इलेक्शन किए, म्यूनसिपल इलेक्शन किया, अब लोकसभा इलेक्शन भी हो रहे, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं हो सकती थी? मैं समझता हूँ कि इन्हें कुछ गड़बड़ करने की सोची होगी और इसीलिए इन्होंने ये इलेक्शन रोक दिया है. क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है, जब हजारों लोग इलेक्शन में शामिल हुए जिस तरह वो कहते हैं, और उस वक्त सारी सिक्योरिटी भी थी, पंचायत के पूरे इलेक्शन हुए, म्यूनसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन हुए, टाउन एरिया कमेटीज़ के इलेक्शन हुए, अच्छी तरह से हो गए. आज इन्हें क्या खतरा लगने लगा जबकि फौज इससे भी ज़्यादा है, हर कोने में यहाँ पे फैली हुई है इलेक्शन के लिए. क्यों नहीं करते हैं? जबकि सब पार्टीज जो हैं इस हक में हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए. ये लोगों को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि इनका मकसद क्या है. और अगर हम एकजुट लड़ेंगे तो इनका जो ये मकसद है यहाँ जो भी करना है वो फेल हो जाएगा. उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम किसी भी सूरत में मरकज़ को यहाँ पे बर्बादी करने के लिए मौका न दें. पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए ये बिल्कुल ठीक है. अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक है फिजा, तो स्टेट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं है फिजा? तो पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए था इनको अगर फिजा यहाँ इतनी खराब है. मुझे हैरानी है ये कह रहे हैं, इन्हें खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. आपको अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह हमें जंग से बचा. आज तक 4 जंगें हुई हैं, कुछ नहीं हुआ, हम ही मारे गए, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला.
अगर कोई रास्ता निकल सकता है इन दोनों मुल्कों में, एक तो बातचीत से निकल सकता है और पाकिस्तान को ये जो दहशतगर्दी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और ज़ोर से कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं किया तो मुल्क दुनिया में करार दिया जाएगा एक दहशतगर्द मुल्क और वहाँ के लोगों के लिए मुसीबतें आएंगी और उन मुसीबतों के लिए उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने कल अपने सफ़ीर को भेजा था, मुशीर को भेजा था, जिन्होंने वज़ीर आज़म से भी बात की है हिंदुस्तान के, सुषमा स्वराज से भी बात की है और हमें उम्मीद है कि ये जो एक जंग का माहौल बन रहा था हो सकता है उसमें कुछ ठंडी हो गई होगी, कमी हो गई होगी। आप भी दुआ करें क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है। इतने बड़े बड़े मुल्क क्यों ना हो, अमेरिका और रूस, उसके सामने कुछ भी नहीं है। Your opinion as per the present situation which people are facing due to the rifts between the two countries? I think we are facing tragedies, and that is unfortunate. It is unfortunate that we have a situation where war is looming on our heads. We want peace. We want understanding between people. Unfortunately, in this election, the party that is ruling is creating a rift between various religions. And that is a tragedy for this country. Muslims feel threatened. Minorities feel threatened. And that is unfortunate. And I think Prime Minister should make it very clear that this nation doesn't belong to one party or one sect of people. He should make it very clear that it belongs to all of us and that we all have to live in peace and harmony with each other. Otherwise, this nation is doomed. Wonderful. We shot one of their planes. And you say, where is the proof of that plane that you shot? Where is the proof that you say, Amit Shah says, 300 people died? Where is the proof of those 300? And if you ask, you are anti-national. You are against the country. Bugger all. Time has come when you should ask questions. When you should say, where are we going? What direction are you taking? This is not the India that I knew as a child. I wish that India returns. I don't know whether it will return. In the memory of George, a fighter for truth, accepted mistakes boldly. First man who had the courage to say in the parliament that in own Nehru's writing there is no sensitive place should be given to a Muslim. दोनों मुल्कों के बीच जंग बाल बच गई जंग से, तो इस वक्त आप कैसे सिचुएशन देखते हैं दोनों मुल्कों? देखिए, जंग की हालत जो है खत्म हो गई है। ये एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। आर्मी को तैयार रखो कि यहां जंग होगी। कोई जंग होने वाली नहीं है। सारी दुनिया देख रही है। ये सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आज की हुकूमत है वो हमारे फौज के अफसर को, बड़े अफसर को इस्तेमाल कर रही है, जिसको इन्होंने लाया कईयों को छोड़ के। आज वो उनके उंगलियों पे नाच रहा है। हमें पार्लियामेंट में पहले ही पता था कि क्योंकि बाकी चीज़ों में फेल हो गए हैं कि ये कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे, पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जंग करेंगे कश्मीर में, जिससे कि ये एक ऐसा अवतार बन जाएगा कि इसके बजाय हिंदुस्तान बच ही नहीं सकता। हिंदुस्तान तब भी बचेगा, ये रहे या न रहे, हम रहें या न रहें, हिंदुस्तान चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ये जो गलत फहमियाँ ये पैदा कर रहे हैं कि हमारे बगैर कुछ भी नहीं है, ये गलत फहमियाँ हमने पहले भी देखी हैं।
کچھ لوگ پہلے بھی کہتے تھے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے. آج بھی ہندوستان چل رہا ہے. ٹوٹل الیکشن کے لیے یہ سرجیکل اسٹرائک جو کی گئی تھی اسی کے لیے تھی. کوئی مرا ہی نہیں وہاں پہ. سوال ہی نہیں. بلکہ ہمارا ہی جہاز گر گیا. ہمارے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے اس جہاز کا نقصان ہو گیا. شکر کیجئے پائلٹ بچ گیا اور عزت سے واپس آ گیا.